Hi everyone and welcome back to my channel called zuzanareacts, where I learn all things para with your help and I just share my Slovak Central European point of view. In today's video I'm going to look into a very interesting video that I came across. It's about what West loves Indian culture but woke Indians don't like it. I didn't even know that was a thing in India. I feel like woke culture is very much the US, tiny bit of UK. I mean, yeah, I would say tiny bit of UK, but I didn't think it spread that much to anywhere else. But I guess I am mistaken. So I'm very curious what I'm going to find out with you in today's video. But before we jump in, please like this video and click on the subscribe button and turn on the notification. Thank you so much for your support. Okay, let's kick this video off. आपने नोटिस किया है, नहीं मैं मेरे मूवी स्टार वाले गुड लुक्स की बात नहीं कर रहा, आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में वेस्टर्न देशों में इंडियन कल्चर बहुत पॉपुलर हो गया है। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने 3 साल पहले मौत के शिकार हुए अपने बेटे का हरिद्वार में श्राद्ध करवाया है। Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. इस ट्रेंड के साथ लेकिन एक और लंबा हिस्टोरिकल ट्रेंड भी है कि वो इंडियंस जो जनरली हमेशा वेस्ट की कॉपी करते हैं, उनको इंडियन कल्चर से वैसे ही एलर्जी हो रखी है जैसे राखी सावंत को कपड़ों से। और यूपी कोई भी साल जाओगे ना तो एक आदमी चिल्लाएगा मंदिर यहीं पर। Prime Minister of the greatest democracy, bowing to a religious fears of a majority in the chamber of a new parliament fills us with shame. लेकिन ऐसा क्यों है, खासकर ऐसे समय पर जब भारतीय कल्चर की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़ रही है? भारत के खुद के लोग भारत के कल्चर को क्यों नहीं पसंद करते? और क्या हम इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए कुछ कर सकते हैं? अरे बिल्कुल यार, और दिखाते हैं इस वीडियो में। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, काफी कंसिस्टेंट ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों में कि वेस्टर्न देशों में इंडियन कल्चर की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। चाहे अलग अलग बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटी हों जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत डीपली योगा और मेडिटेशन को अडॉप्ट किया है। No walls, no rules. And it's really great for the world to relax and commune with nature. दुनिया के कई देश आज योगा को बहुत खुशी से अडॉप्ट कर रहे हैं और योगा डे मना रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ अगर अमेरिका को देखें तो योगा की अडॉप्शन वहां पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। अराउंड 10% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन रेगुलरली योगा करती है। योगा की पॉपुलैरिटी 2010 और 2021 के बीच में 64% बढ़ी है। और सिर्फ योगा जैसी प्रैक्टिस। Okay, can I just say one thing? When it comes to that, at least in relationship to Slovakia. So I think Slovak culture is very conservative, and yoga might be looked upon as like something woohoo, something unknown, something bad. When that started to kind of become popular, I started to say, well, you know, these exercises, it's something that we've had. They're just called yoga. So this is why I want to correct a bit here, at least for Slovakia. So for example, you know, you have a cat cow, a cat dog, whatever pose in yoga. There are poses from yoga that have been called just an exercise here in Slovakia before yoga has ever arrived, right? So you decide for yourself. It's like, in a way, yeah, it would be like a new concept, but in reality we've had these exercises here in Slovakia before. For example, I don't know, I can't comment on any other countries. I just know that certain poses have been used here as an exercise. Let's say you hurt your back, you go what we call rehabilitation. So you go to like a usually it happens here in hospitals, and you just go and you have these exercises, and the exercise with they give you exercises, and they're very similar to yogic exercises, in fact. So yeah, you be the judge, but let's continue.
प्रैक्टिसेस ही नहीं बल्कि इंडिया के वेदों की, उपनिषदों की, गीता की जो स्पिरिचुअलिटी है उसको भी वेस्टर्नर्स अब काफी अडॉप्ट कर रहे हैं या एटलीस्ट अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाल में ही रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म ओपेनहाइमर, उसके जो प्रोटैगनिस्ट है ओपेनहाइमर, जो यूएस के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं, वो खुद भारतीय स्पिरिचुअलिटी और गीता से बहुत इंस्पायर्ड थे। इनफैक्ट यूएस ने जब पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज किया था तो उसके बाद ओपेनहाइमर ने गीता को कोट किया था। Takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." और भी कई बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं जैसे कि आर्थर शोपेनहावर, जो एक जर्मन फिलोसोफर थे। उन्होंने जब पहली बार उपनिषद पढ़ी तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उपनिषद पढ़ के उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने दुनिया का सारा ज्ञान पढ़ लिया है। अर्विन श्रोडिंगर, जो कि एक और फेमस नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा था कि उनके बहुत सारे आइडियाज उपनिषदों से इंस्पायर्ड हैं। और सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, बड़े बड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज भी हिंदू कल्चर, हिंदू स्पिरिचुअलिटी और हिंदू प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं। When you die, Hugh, do you I've just been reading about it this morning. It's called the Bhagavad Gita. I chanted it for like 3 days non-stop. और इनसे इन्फ्लुएंस होकर नॉर्मल लोग भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन देशों में। रिसेंटली टेक्सास में 10,000 लोगों ने गुरु पूर्णिमा के दिन एक साथ गीता का पाठ किया था। अमेरिका में सैकड़ों स्कूलों में रेगुलरली मेडिटेशन सिखाया जा रहा है और इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। Meditation and yoga, these are fundamental parts of my life. तो एक तो हुआ ये ट्रेंड, लेकिन इसके साथ साथ एक और हिस्टोरिकल ट्रेंड है इंडिया में जिससे शायद आप ज्यादा फेमिलियर होंगे, और वो हिंदुस्तानी जो अपने ही कल्चर से नफरत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गौमूत्र पी लो। They don't want us to exist. मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। 40% यूपी के पास बाथरूम नहीं है। इतना प्रसाद खिलाओगे तो छोड़ेंगे कहाँ? जैसा कि आप इन ट्वीट्स में देख सकते हैं कि जितने भी भद्दे वल्गर जोक्स होते हैं वो सनातन कल्चर पे ही मारे जाते हैं। Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest. Can you imagine how creepy that was for Sita? मेरा पिया अगर है और राम जी don't give about your पिया. Huge head is got one. There is no Hindu god of height. What good is it having all these extra arms if you can't reach anything anywhere? गणेश की पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते हैं। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। एक और ट्रेंड है वेस्टर्न देशों में, और वो ट्रेंड है कि भारत के जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उनकी भी पॉपुलैरिटी। Okay, can I just have one thing? So they were showing, and I want to make sure that this is not really offending anyone, but he was just showing us skits from, like a stand-up comedy, and stand-up comedy intention is to always ridicule something, right? So why is that show, like, even here we would pick on ourselves, and I think that for me, at least in life, you have to have some humor, right? So why would that be picked as Indians not liking Indian culture, or there is something more behind that I'm not aware of? So if that is the case, please do let me know in the comments. वेस्टर्न देशों में बहुत बढ़ गई है। Sadhguru is in town. I've been following him for a while. There's one that I follow on Instagram now called Sadhguru. Yeah, I follow him too. I'm actually just finishing one of his books. The word yoga, literally, if you go back to its original meaning, it means to yoke. What happens after we die? Some things you know best only by experience, Alexander. तो लाजमी है कि जो लोग हिंदुइज्म से नफरत करते हैं, सनातन कल्चर से नफरत करते हैं, वो लोग इन गुरुओं को भी टारगेट करेंगे। भाई, इनकी हिम्मत कैसे हुई कि वेस्टर्न देशों में जाकर सनातन कल्चर की पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश करें। इन पर तरह तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाते हैं। सदगुरु को इसी तरह से टारगेट किया गया है। इनके ऊपर भी बहुत सारे बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं। वो मर्डर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने किया था। Did some illegal stuff on the side to make obscene amounts of money and raise a spiritual empire. Jaggi's Isha Foundation built a 150-acre campus in an ecologically sensitive area without necessary permissions. श्री रविशंकर को भी इसी तरह से टारगेट किया गया है। An ecologically sensitive zone which has been destroyed, plundered by this Baba called Shri Ravi Shankar. बाबा रामदेव पर ही ऐसे भी अटैक्स हुए हैं। देखिए, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये गुरु जो है वो बिल्कुल 100%
परफेक्ट है, इन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया। सदगुरु को एक बार राइटली चैलेंज किया गया था कि आप डिप्रेशन या बाइपोलर डिजीज जैसे डिजीजेस को सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं और आपका मानना है कि सिर्फ हैप्पीनेस चूज करने से बंदा हैप्पी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन और बाइपोलर डिजीज जैसे जो मेंटल डिजीजेस होते हैं, ये कितने सीरियस होते हैं और कितनी बुरी तरह से लोगों को इफेक्ट करते हैं। देख के लगता है कि सदगुरु उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। बाबा रामदेव और पतंजलि के ऊपर भी यह आरोप लगा है कि उन्होंने क्लेम किया है कि पतंजलि प्रोडक्ट से कैंसर ही नहीं बल्कि एड्स भी गायब हो जाता है। तो आई एग्री कि जब इस तरह के क्लेम्स किए जाते हैं तो उन क्लेम्स पर सवाल उठाना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन अक्सर जैसा मैंने आपको दिखाया है कि इन पर बेबुनियाद बेतुके आरोप लगाकर कुछ भी करके इनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जाती है। देखिए, जहां तक भारतीय कल्चर और भारतीय धर्म को प्रिजर्व करने की बात हो रही है, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आप जैसे लोगों का, भारत के आम सिटीजन का। हमारे देश में 70 सालों तक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के बावजूद, हमारे हिस्ट्री करिकुलम को डिस्टॉर्ट करने के बावजूद, हमारे कल्चर को मीडिया में और पॉप कल्चर में, फिल्मों में नीचा दिखाने के बावजूद, आप जैसे आम हिंदुस्तानियों ने हमारे कल्चर को इतने सालों तक संभाल के रखा है। और इसलिए आज अपने कल्चर, अपने धर्म से जुड़ने में और उसको संभालने में मैं आपकी बड़ी आयरनी है। आयरनी ये है कि ये वही हिंदुस्तानी है जो अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशंस को अटैक करते हैं, नीचा दिखाते हैं, जो कि जनरली वेस्टर्न ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए बहुत डेस्परेट रहते हैं। आर्चीज फिल्म याद है आपको? ये तो इतनी बुरी तरह से वेस्टर्न ट्रेंड की कॉपी है यार। मतलब कौन जी रहा था इस तरह से 1960s में इंडिया में यार? इन क्लिप्स में भी आप देख सकते हैं। इन इंडिया इट इज लाइक सोसाइटी गवर्न्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वन पर्सन। उधर जैसे ओपन माइंडेड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज है, कंजर्वेटिव है, इधर ऑर्थोडॉक्स है। कि जो लोग भारतीय कल्चर को नीचा दिखाते हैं उनको वेस्टर्न कल्चर बहुत इमेंसिपेटिंग, बहुत फ्री लगता है। लेकिन कम से कम कुछ लोग ये मानने को तैयार हैं कि भाई वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने से उनको एक साइन ऑफ स्टेटस फील होता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बहुत सारे इंडियंस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो इससे कूल दिखेंगे। और बड़े बड़े जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं वो भी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। हमारे कोई बाबू आते हैं जो हमारे फिल्म के हीरो हैं गांव में, लेकिन जो भी इंसान हिंदी बोल रहा है गांव में, वो एक्चुअल में दिखाया जाता है अनपढ़ गवार अंगूठा छाप है। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। और फिर कई लोगों को पीयर प्रेशर में आके भी वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करना पड़ता है क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया तो वो कूल नहीं दिखेंगे। अब देखिए, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न कल्चर में सब कुछ गलत है, हमें नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। अगर मैंने ऐसा कहा तो मैं दुनिया का सीरियसली सबसे बड़ा हिपोक्रेट होऊंगा, क्योंकि मैं खुद वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं खुद वेस्टर्न मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं खुद वेस्टर्न देश में रहता हूँ, वेस्टर्न भाषा बोलता हूँ, एप्पल और HP जैसे वेस्टर्न प्रोडक्ट्स में रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ। मुझे वेस्ट पसंद है, तो मैं अगर बोलूंगा कि नहीं वेस्ट की सारी चीजें गलत है, हमको बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, तो ये तो उससे भी बड़ी हिपोक्रेसी हो जाएगी कि जब बॉलीवुड एक्टर्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं कि भाई बी योरसेल्फ, लेकिन 2 दिन के बाद टीवी पे फेयरनेस प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करते हैं। देखिए, वेस्टर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना या उनमें शौक रखना कुछ गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब वेस्टर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए हमें अपने ही कल्चर को नीचा दिखाना जरूरी होता है। हमने देखे हैं एग्जाम्पल्स इसके कि कॉन्वेंट स्कूल्स में हिंदी बोलने के लिए लोगों को फाइन किया जाता है, लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, उनको गंवार गंवार बोला जाता है। हमने ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे हैं कि रेस्टोरेंट्स में औरतों को साड़ी पहनकर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि उस रेस्टोरेंट में सिर्फ हमने ऐसे ट्रेंड देखे हैं जहां क्रिसमस बड़ा कूल माना जाता है लेकिन कांवड़ यात्रा बहुत गलत है यार। सेंटा क्लॉज वाले कपड़े पहनना बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन भगवा पहनना बहुत गलत है यार। इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन हिंदी बोलना लैंग्वेज इंपोजिशन बन जाता है। उर्दू बोलने से गंगा जमुना की तहजीब बढ़ती है, हिंदी बोलने से हिंदू सुप्रीमेसी बढ़ती है। ब्रेव हार्ट जैसी फिल्में जिसमें एक गोरा अपने देश की फ्रीडम के लिए लड़ता है, अपने देश को इन्वेडर से आजाद कराने की कोशिश करता है, उस फिल्म को लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन RRR, तान्हाजी और उरी जैसी फिल्में टॉक्सिक नेशनलिज्म और हिंदू सुप्रीमेसी मानी जाती हैं। Tanhaji the Unsung Warrior is the latest in the slew of Islamophobic period films coming out of Bollywood in recent years. 4 बीवियां होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कन्यादान करना बहुत पेट्रियार्कल है। कुन फाया कुन और ख्वाजा मेरे ख्वाजा के गाने बहुत खूबसूरत हैं लेकिन हनुमान जी का झंडा दिखाना बहुत गलत है। ईद बहुत खूबसूरत है लेकिन होली से टॉक्सिक पेट्रियार्की बहुत बढ़ती है। मार्वल बहुत कूल है लेकिन आदि पुरुष नहीं, इसमें ये लोग सही हैं। तो क्लियरली इन एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड है कि कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो वेस्टर्न कल्चर को, बाहरी कल्चर को अडॉप्ट करते हैं लेकिन उसके साथ साथ अपने कल्चर को भी नीचा दिखाते हैं। बट व्हाई, क्यों है ऐसा? अब देखिए इसके क्या रीजंस है। Okay, I'm very curious what he's going to say, why it is like that. To me, when I'm observing what he's enumerating, first of all, I want to say Western culture, I think what he's literally
talking about is America, because in a way, what I'm observing is kind of similar what would have happened to Slovakia, where with the influence of the West, even though you guys consider us West, we consider the other countries the West, right? So our definitions when it comes to the West really differ here. I would not consider myself to be a Western country at all. So basically we have the same, that we would have adopted, for example, Halloween. We would have adopted, what else is there? Santa Claus was never really a thing. Obviously we get all their movies and stuff, but this is how, when one culture and certain things are portrayed cool, this is where you want to go and adopt it, right? Like, especially it appeals to a young person, which is still in their forming stage of their lives. So so we do have the same thing in here. Unfortunately, for example, we Halloween, it was never a thing. We have All Saints, and you go to the graves to light a candle for the deceased ones. It's more like you're honoring the deceased people. It's never a celebration, but American culture, I feel like, is there to commercialize everything. So basically a lot of psychology is really being used on people to and in advertising to make things look cool and appealable. And they have really succeeded. I think out of everyone, Americans have really succeeded in exporting their culture. And I think it's only our cultures to blame for not sustaining that. But when you are culture that doesn't have, for example, like Slovakia or perhaps like India, you guys have gone through a lot in your history, and you had to fight a lot, all that kind of stuff, like perceived to be poor nation, Slovakia perceived to be poor nation. So once you don't have resources at that kind of a talent or consumerism market, you don't have a way how to, you're struggling in your nationality on so many different fronts, whereas let's say Americans have figured that out, but they figure out the expansionism through different means. And I don't think that they even thought about it as expansionism. I think they thought about it like, what do we do with our free time? Well, isn't that cool? Like becoming actors, like how can I portray it in the coolest, most appealing way to someone? And I feel like that they are masters at that. I feel like, and that is no offense to Americans, I'm going to say that out loud, if you like, they are masters in superficialism, Americans. So no wonder that they are they have this huge Hollywood that impacted basically the entire world, and everyone's looking up to them. But then because it is so superficial and hollow, there is, on the other hand, a strong need, I guess, on the other side, for something more meaningful to their life. This is why they embrace Sadhguru. This is why they embrace meditation, mindfulness. These are all the kind of practices that are very popular here in the West. And I think it just, like in life, you have to have balance. So I think that these things balance each other out. But there are many different factors, I believe, that are underlying for why people might be criticizing, their own culture. And I'm very curious to learn what he's about to say. So let's continue. उसको डिटेल में हमने एक वीडियो में ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है, जिसको आप यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन संक्षिप्त में राजपाल यादव के फॉर्म में स्टोरी ये है। देखिए, शुरुआत होती है अंग्रेजों से, जिन्होंने जब भारत पर कब्जा किया तो इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके एक यूरोपियन इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया, जिसका गोल था, अकॉर्डिंग टू थॉमस बैबिंगटन मकॉले, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर था अंग्रेजों का, कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ इंडियंस क्रिएट करना जो शक्ल से भारतीय दिखते हो लेकिन एटीट्यूड से और कल्चर से पूरी तरह से अंग्रेज हो। इस काम में चर्चेस को भी बहुत सपोर्ट दिया गया कि वो अलग अलग कॉन्वेंट स्कूल्स डेवलप करे। चर्चेस को बहुत बड़ी बड़ी जमीन दी गई, 99 ईयर्स की लीसेस दी गई, सिर्फ एक रुपए के दाम पर। और ये सैकड़ों कॉन्वेंट स्कूल जो बनाए गए हैं, उनमें से बहुत सारे आज भी ऑपरेशनल हैं। उसका रिजल्ट हुआ कि राम मोहन रॉय जैसे लोग हमारे देश में आए, जो कि रिफॉर्मर थे, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया की तरफ बहुत अच्छे थे। लेकिन एट द सेम टाइम राम मोहन रॉय ये चाहते थे कि भारत में इंडियन एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाए, संस्कृत एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाए, बल्कि उसको रिप्लेस करके अंग्रेजी एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई जाए। अनफॉर्चुनेटली आजादी के बाद भी ये सिचुएशन बहुत सुधरी नहीं। जिन ब्यूरोक्रेट्स को अंग्रेजों ने ट्रेन किया था यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन और यूरोपियन इंडोक्ट्रिनेशन
एजुकेशन हमारे इंडियंस को सिखाने के लिए हमारे पॉलिटिशियंस ने आजादी के बाद उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को एजुकेशन की बागडोर सौंप दी। इस नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से भारत के नोबेल प्राइज विनर सीवी रमन इतना नाराज थे कि जब नेहरू जी की गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न दिया था तो ये भारत रत्न सीवी रमन ने गुस्से में फोड़ दिया था। उसके ऊपर से हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो इंडियन ब्रदरहुड से ज्यादा इस्लामिक ब्रदरहुड में मानते थे, जिनका मानना था कि इस्लाम की वजह से भारत को सिविलाइज किया गया है। मौलाना आजाद asked Indian Muslims to fight to preserve the Islamic Caliphate. If a thorn gets stuck in a Turk's soul in the battlefield of war, then I swear by the God of Islam, no Muslim of India can be a Muslim until he feels that prick in his heart instead of soul, because the Millat-e-Islam is a single body. He even criticized liberal Muslims who did not side with him in support of the caliphate. इसके बाद भी सिचुएशन सुधरी नहीं। इसके बाद इंदिरा गांधी के अंडर आए एक कम्युनिस्ट एजुकेशन मिनिस्टर नूरुल हसन, जिन्होंने और भी बड़े बड़े गुल खिलाए और जेएनयू और आईसीएचआर जैसे इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया और उसमें अपने ही जैसे कम्युनिस्ट भरने शुरू कर दिए। The Jawaharlal Nehru University, or the JNU, was the brainchild of Prime Minister Indira Gandhi and Hassan. JNU was meant to produce and train the core of a committed bureaucracy who were to be loyal to the ideals of the left. The institution took a sharp left turn thanks to the curricula and faculty carefully chosen by Hassan from his pool of pro-communist teachers. Over the years, many of the faculty posts were held by the left और लिबरल एकेडमिक्स। और फिर इन हिस्टोरियंस को रिस्पांसिबिलिटी दी गई कि वो पूरे इंडिया का एजुकेशन करिकुलम डिजाइन करें। These academics would hold important posts in government institutions like the NCRT and ICHR and go on to write textbooks that would one day be taught in India's schools and colleges. भाई इनके क्रिएट किए गए एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से कुछ लोग फिर भी नेशनलिस्ट माइंडसेट के हैं, ये तो अपने आप में एक छोटा मिरेकल है। भाई देखिए, जैसे जीसस पानी को वाइन में बदल के मिरेकल करते थे, उसी तरह से ऐसे एजुकेशन सिस्टम से भी कुछ लोग इंडिया में नेशनलिस्ट हैं, ये भी अपनी तरह का ही एक मिरेकल है। तो इस वजह से कई जनरेशंस इंडिया की आई हैं जिन्हें लगता है कि देखिए इंडिया में तो कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, इंडिया ने दुनिया को कुछ पॉजिटिव दिया ही नहीं है, इंडिया ने सिर्फ ऑप्रेसिव खराब चीजें दी हैं दुनिया को, इसलिए इंडिया में जो भी अच्छा है वो बाहर से आया है, या तो मुस्लिम लेके आए हैं या क्रिश्चियंस लेके आए हैं। और इस तरह के माइंडसेट का एक बहुत बड़ा खतरा है कि इंडिया की जो स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी अप्रोप्रिएशन का खतरा बन जाता है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अगर हम अपनी स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे योगा, मेडिटेशन, हमारी स्पिरिचुअलिटी की ओनरशिप नहीं लेंगे, उसकी लीडरशिप नहीं लेंगे, तो दुनिया के दूसरे देश इसको अप्रोप्रिएट करने लगेंगे और जैसा कि राजीव मल्होत्रा ने कहा है, इसको डाइजेस्ट करने लगेंगे। यानी वो कहने लगेंगे कि भाई ये प्रैक्टिसेस इंडिया से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है, ये तो हमारा कल्चर है एक्चुअली। इसके एग्जांपल्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं। Here was Kristen do yoga, and today I'm going to bring you a beginner's warrior flow. They contaminated yoga, especially with their Hinduism and Buddhism. लेकिन घबराइए नहीं, होप की कुछ किरणें भी हैं। चाहे आप पॉलिटिकली ही देखें, जिस तरह से पिछले 10 सालों में हिंदुत्व मेन स्ट्रीम में आया है और उसका बीजेपी जैसी हिंदुत्व डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी को इतना फायदा हुआ है, इतने वोट्स मिले हैं, ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर हम कल्चरली या पॉप कल्चर में भी देखें तो 2022 की जो 3 हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्में थी, उनमें से 2 स्पेसिफिकली भारतीय कल्चर से जुड़ी हुई हैं। पिछले 10 सालों में इस तरह की फिल्में डेवलप हुई हैं इंडिया में जो ऑनेस्टली मैं तो पहले इमेजिन भी नहीं कर सकता था। चाहे RRR हो, कश्मीर फाइल्स हो, कांतारा हो, बाहुबली हो, पोन्नियन सेल्वन हो, तान्हाजी हो, जिन्होंने कुछ लोगों के पेट में बहुत दर्द भी किया है। Tanaji the Unsung Warrior is the latest in the slew of Islamophobic period films coming out of Bollywood in recent years. और इन सब मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। तानाजी ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाए, कश्मीर फाइल्स ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाए, कांतारा ने 400 करोड़ कमाए, बाहुबली ने तो 1000 करोड़ कमाए, पोन्नियन सेल्वन ने 400 करोड़ कमाए, RRR ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड्स तोड़े और आदि पुरुष बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। सॉरी, गलती से निकल गया मुंह से। और अभी तो राजमौली जिन्होंने RRR और बाहुबली डायरेक्ट की थी, उन्होंने कहा है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो एक 10 पार्ट फिल्म बनाना चाहते हैं महाभारत पर बेस। यार कसम से, जितना विराट कोहली को IPL ट्रॉफी के लिए एक्साइटमेंट नहीं है ना, उससे ज्यादा मेरे को इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट है। और इस तरह की फिल्में और इस तरह की फिल्मों का जो सक्सेस है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि भारत में एक कल्चरल रिवाइवल हो रहा है। म्यूजिक में भी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे खासकर जेन ज़ी में रैप इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर है। उसमें भी अगर आप देखिए
देखिए तो एक कल्चरल रिवाइवल हो रहा है। और भी बड़े बड़े अगर हम कल्चरल इवेंट्स को देखें, जैसे कि राम मंदिर के बनने को पूरे देश से कितना सपोर्ट मिला है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को कितना सपोर्ट मिला है, CAA को कितना सपोर्ट मिला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कितना सपोर्ट मिल रहा है, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को कितना सपोर्ट मिला था, हमारे इंडिजिनस फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, लचित बोरफुकन, इन लोगों को अब कितना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो देयरफॉर एक लॉजिकल सवाल उठता है कि इस कल्चरल रिवाइवल को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और इंडियंस को अपने कल्चर से और भी ज्यादा कनेक्ट कैसे किया जा सकता है। देखिए, उसके लिए माइंडसेट में एक बहुत क्लियर और रेडिकल शिफ्ट लाने की जरूरत है और ये शुरू होता है एजुकेशन से। और थैंकफुली इस पर हमारी गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेप ले रही है। फरवरी 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि एक नया NCERT बोर्ड क्रिएट किया जाएगा, कॉल्ड दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड। ये बोर्ड हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से रिवैम्प करेगा और हम अपने स्टूडेंट्स को हिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं उसको भी पूरी तरह से चेंज करेगा। और इसके मेंबर्स भी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल सुधा मूर्ति, हिस्टोरियन संजीव सान्याल जिन्होंने लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के बहुत सारे प्रोपेगेंडे ध्वस्त किए हैं, विवेक देबरॉय जिन्होंने लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के बहुत सारे प्रोपेगेंडे ध्वस्त किए हैं, मिशेल दनीनो जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बहुत अच्छी रिसर्च की है और इस प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिंदू कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मिशेल दनीनो की रिसर्च ने ये क्लियरली दिखाया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सनातन धर्म की ही सिविलाइजेशन है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये लोग एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी डेवलप करें, एक ऐसा हिस्टोरिकल करिकुलम डेवलप करें जो इंडियंस के अंदर अपनी हिस्ट्री के प्रति और भी प्राइड और एक क्लोज कनेक्शन डेवलप करेगा। दूसरा बड़ा स्टेप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, किसी भी देश में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है तो उस देश के लोगों में एक कॉन्फिडेंस आता है जो अदरवाइज लोगों के पास अक्सर नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान एक यूनिक केस है बिकॉज पाकिस्तान इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। लेकिन मैं नॉर्मल देशों की बात कर रहा हूँ जिनके स्क्रू वगैरह लूज नहीं होते। अब देखिए, आज पूरी दुनिया चाइना की तरफ कैसे रिएक्ट कर रही है। भले ही चाइना हमारा दुश्मन हो, भले ही चाइना से हम बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हो, लेकिन चाइना की जो आज इकोनॉमिक पावर है उसकी वजह से लोग चाइना को भले ही पसंद ना करते हो लेकिन उन्हें चाइना को रिस्पेक्ट करना पड़ रहा है। और इस वजह से चाइना के अंदर भी जो लोग हैं उनमें एक प्राइड है कि भाई दुनिया में हम एक मकाम पर पहुंच चुके हैं, हमारा एक रुतबा है दुनिया में। लेट्स से इंडिया जब 8 या 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तब इंडियंस में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हमें अंधाधुंध वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर से बेहतर है। हम वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन हमें अपने कल्चर में भी अब एक फक्र फील होता है। और हमने ये भी देखा है कि चाइना वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को भी फंड करता है। Chinese have funded media organizations across the world. अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स में एक थिंक टैंक चल रहा है। साउथ अफ्रीका में नेताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा ब्राजील और भारत में कई मीडिया संस्थान भी चलाए जा रहे हैं, जिससे कि वेस्टर्न देशों में चाइना का एक पॉजिटिव ओपिनियन क्रिएट होता है। और जब चाइनीज लोग देखते हैं कि वेस्टर्न देश हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उनको अपने कल्चर में प्राइड फील होता है। इंडिया भी इसी तरह से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, सिर्फ अपने देश में प्राइड क्रिएट करने के लिए नहीं बल्कि उन देशों में इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए भी। और फाइनली सोशल इमेंसिपेशन, यूनिफिकेशन एंड डीकोलोनाइजेशन थ्रू हिंदुत्व। हिंदुत्व दुनिया की सबसे सक्सेसफुल डीकोलोनाइजेशन एक्सरसाइज रही है। जितना लोग कास्ट और रीजन के बैरियर्स को तोड़कर हिंदुत्व के बैनर में यूनाइट होंगे उतना वो अपने कास्ट से कम जुड़ेंगे, अपने रीजन, अपने लैंग्वेज और दूसरे कल्चर से कम जुड़ेंगे। और इंडिया में एक यूनिटी बढ़ेगी जो कि अपने सिविलाइजेशन की प्राइड में बेस्ड है। और लास्टली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से इंडियंस को अपनी सिविलाइजेशन, अपने कल्चर से और भी क्लोजली कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Hey, so I believe this is the end to the video. It's a very, very, very interesting video. And I wonder what you guys think about, what even brought the subject of this video up to life. So is that indeed a lot of people in India that you feel like are criticizing India and criticizing the culture and not being proud? Because I think that was towards his last point where he was trying to bring the kind of pride back, and he was talking about the economical power, and I myself kind of see similarities in a way with, my nation in a way, because we've been slaves for centuries, and to other, and we've been used in, where I'm here as a I don't want to say weapon, but we've been used as an instrument for different political needs of surrounding countries. So I feel like
for a country, and this is just my observation, I might be completely wrong here, but I'm just coming from a perspective of a Slovak person that has been slave to everyone for the entire state. I feel like Slovak people have very slave mentality, and even though there is a lot to be proud of, first of all, that we actually survived centuries of Hungarization and stuff like that, we don't feel proud. We don't feel proud that we have a number one person for which, if it wasn't for him, Czechoslovakia as a first kind of state would never happen. And it was a Slovak person. And in history, like, there are other two players that were important that came to play to form the Czechoslovakia. They were Czech guys. They're way more glorified than the Slovak man, which actually I went to his memorial on my Instagram. I think you might be able to see a recording of that there in case I've actually posted it there. I know I've done a live through there. So we definitely here don't have a strong, what is called national kind of pride or understanding. I sometimes feel like Slovaks would sell their mother for a cent. That's kind of a mentality that I've been picking up. So there is, and I think it's connected with the fact that we have been slaves. We don't know how to rule ourselves, and because the economy is not good. And what I was trying to make is the fact that he mentioned that as the economical power and achievements of nations become, this is, I feel like, when nations are, building their more national identity. The question is it right? Is it wrong? It has been, a debate on these topics, even in Slovakia, which is just such a small nation if you think about it. In 1993, we've only been formed, and already, I would say 20 years ago, they would be having discussions if there is a point even in having a national identity. That speaks a lot to what Slovaks are like. But I feel like from the comments, the sense that I get from you guys is that you are actually very proud, and I feel like there is so much to be proud of. Like, you have such a rich history, and it's kind of in a way also very inspirational history, because it's about freedom fighting, right? Like, terrible things have happened in that land, and you're still standing, and you're making yourself of a success, and perhaps fighting the export American culture, because they're making it look so nice and shiny and appealing. But I think, obviously the West is adopting meditation and yoga, things that you guys have known for centuries, that have been beneficial, and so much richness. So I'm actually surprised that people would feel, perhaps there are other things, I've heard things from my friends that live in Asia, and I'll just say it out loud, and I'm just repeating what they have told me. That's not my knowledge. I didn't know that until they told me, is that India is looked like as the poorest in the region still, which is surprising considering we're sending things to the moon, and the most dangerous, actually. I had no idea, out of Asian countries, that Asian countries, they don't really like India. I had no idea about that. Maybe feel free to comment. I don't come here to stir anything. I'm just repeating what I have heard, and that's a person actually living in Asia, and they're advised, against many things there. So, my knowledge of India has been rather poor before I started a channel. And, so I'd like to think that I come to this with very unbiased point of view, because I literally just been learning about India since I started the channel. So, for me, the main interest is really in spirituality, but so it actually saddens me that people would actually be laughing at that. But at the same time, we are free human beings, so we are entitled to our opinions and ways of living. So everyone sees things different, which is fine. I think it's important to have discourse in a society, but I think like, search for meaning is very high on every person's agenda. I think we start asking that questions pretty early on in life. So
India has a very rich history of that. So this is why it strikes me, why would someone, take it for granted or ridicule that? I don't quite comprehend or compute at this point in time, but maybe you could let me know more about this and how you perceive the current situation being, and why do you think that is or that is not, in the comments below. And with that being said, thank you so much for watching this video. If you did enjoy, please give a thumbs up, share, like, and subscribe to this channel, and I'll see you next one. Until then, please do take care. I'm sending much love. Bye bye.